Hello students, you are welcome to your class. In this video, we will get some knowledge about articles. Do you know what are the articles? चलिए हम articles को समझते हैं through a story. There were three brothers, जिनके names थे A, N and the. The was elder brother and A and N were twins. अब आप कहेंगे मैम ये कैसा नेम है? अगर आपको आर्टिकल समझना है तो आपको इन तीनों के बारे में जानना तो पड़ेगा ही, बिकॉज these three are the articles. A, N and the are called the articles. Let's know the story further. A and N हमेशा singular things को ही पसंद करते थे, जैसे a ball, a bat, an apple, an ant. A केवल बॉल या बैट के साथ ही प्ले करता और एन वन एप्पल या वन एंट के साथ ही रहता. और जो एल्डर ब्रदर है मीन्स द, ये हमेशा ऐसी चीजों के साथ रहता है जो यूनिक है, विच आर ओनली वन ऑफ देयर काइंड और वेरी स्पेशल. तो कैसी लगी हमारी स्टोरी? मजेदार थी ना? तो अब आप बताइए कि आर्टिकल्स के बारे में आप क्या क्या समझे. द स्टोरी वॉज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द आर्टिकल्स. There are three articles. कौन कौन से? Good, A, N and the. A and N का यूज हम singular nouns के साथ करते हैं. Did you notice I said singular noun means इसका यूज हम केवल nouns के साथ ही करते हैं, ना कि pronoun, adjective या फिर किसी other part of speech के साथ. अच्छा, do you know what are the vowels and consonants? I am asking so because अगर आपको आर्टिकल्स के बारे में समझना है तो आपको वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट तो अच्छे से पता होने ही चाहिए. ओनली देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द टॉपिक आर्टिकल्स. द अल्फाबेट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट्स. डू यू नो वॉवेल्स कितने होते हैं? यस, इट्स इजी इनफ टू आंसर. A, E, I, O, U are the vowels. Vowels are pronounced with open mouth. फॉर एग्जाम्पल, जब आप ई बोलते हैं तो आपका माउथ, टंग, टीथ या लिप मूव नहीं करता. ट्राई देम बाय योरसेल्फ. नेक्स्ट इज कॉन्सोनेंट. इन कॉन्सोनेंट देयर आर 21 लेटर्स. कॉन्सोनेंट्स को प्रोनाउंस करते टाइम हमारा माउथ, लिप और टंग, टीथ मूव करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी प्रोनाउंस बी, वी ब्रीफली क्लोज आवर लिप्स. नाउ when we have known about vowel and consonants, let's know the rules of using articles. The first is A. A and N are used before the singular nouns. A is used before the words that start with a consonant. For example, a ball, a chain, a watch, etc. A का यूज हम उन्हीं वर्ड्स के साथ करते हैं जिनका पहला लेटर कॉन्सोनेंट हो, जैसे बॉल का पहला लेटर है B, which is a consonant. N is used before the words that start with a vowel. N का यूज हम उन्हीं वर्ड्स के साथ करते हैं जो vowel से स्टार्ट हो, जैसे an egg, an apple, an ostrich. The third is the. The is used before the things that are unique, very special or only one of their kind. जैसे द सन, द मून. सन या मून बहुत ही स्पेशल है, ये अपनी तरह की केवल एक है. क्या आपने किसी दूसरे सन को देखा है? नहीं. That's why we use the before them. तो चलिए अब हम कुछ एक्सरसाइजेस को सॉल्व करते हैं. The question is, fill in the blanks with the correct articles where necessary. Here you will get some sentences with some blanks. Fill correct articles in them. Dash, sun rises in the east. Which article you will fill here? The, correct. Because the sun is only one of its kind. She has dash umbrella in her hand is the next. तो अब आप यहाँ क्या fill करेंगे? We will fill an, because the word umbrella starts with U, which is a vowel and it sounds vowel. Neha has dash clock that rings at 6 o'clock in the morning.
In this sentence, the blank is before the clock. And here we will fill A because the word clock starts with C and it is a consonant. The next is, there were two dash boys in the class. In this sentence, the blank is before boys. So tell me, आप यहाँ कौन सा article fill करेंगे? Here, the noun boys is plural. तो यहाँ हम कोई भी article fill नहीं करेंगे. So here we will put a cross mark. The next and the last is, Ramesh got dash expensive gift. So which article you will fill here? Correct. Here we will fill an because expensive starts with the vowel E. Now it's practice time. Fill in the blanks with articles where necessary. And here are your sentences. Now students, hope you have got enough knowledge about articles. So keep on learning. Bye.